So hey guys, welcome back to the channel. Welcome back to the Sunday video. Basically in this Sunday video I'm going to share my watch list for next week. There are few stocks in my watch list which I am expecting to give a very good momentum in next week. Basically I'm going to share all those stocks with you. I'm going to share my trading plan and why you should listen to me. And first of all, those who are watching this channel for the first time, my name is Sanu. I'm a momentum trader. Basically I try to generate like 3 to 5% return monthly consistently by trading in equities by just giving less than 33 minutes a day. This is what I do. This is what I have been doing since last 4 or 5 years I've been in the market. And so let's start the video. Basically, like today's video is going to be super important, and basically people would say that you always say this in each and every video, but to be honest with you, this video is going to be super important for you, because since, like, as if you would say, let me open my screen, and I hope you guys can see my screen, right? And if you guys can see here, look at this. If you will see, so last week almost small cap has come down almost -8%, right? All the stocks, all the mid cap stocks, in nifty stocks, small cap stocks, those stocks which were in my stock, those like stocks which were in my watch list, those stocks which were performing good setup as according to me, those all setups failed. Those all like stocks just came down, right? But basically, as after coming 8% down, I am expecting a pullback. I'll give you the reasons, I'll give you the honest reasons, I'll show you the proof like why I'm expecting a pullback from this. And basically I haven't traded since last 1 and 2 week, and next week I'm going to trade. There are few stocks in my watch list which I'm going to share with you, जिसमें मैं trade करने वाला हूँ if my entry gets triggered in those stocks, right? So let's start with, first of all, let's start with the small cap index. Basically we try to trade in small cap and mid cap index, and the reason is quite simple, because small cap stocks and mid cap stocks has potential to give like 15 to 20% momentum in stocks. So like this is what we try to catch. So we trade in small cap and mid cap index. So let's start with the analysis of small cap index. And if you will look at the small cap index, look at this. So now the small cap index is trading somewhere at 17,600, right? And in the last June, almost 5 to 6 months back, like at the same level market was trading. So since last 6 to 7 months, market hasn't performed good. Market has not given any returns. So if you are someone who is making good returns, or whose maximum drawdown is very less, like almost market is on zero, and who has generated even 10 to 20% return in last like 6 to 7 months, trust me, you all have outperformed the market, and you all have done very good. So you should be proud of yourself. So let's talk about the analysis for next week. And if I'll show you the analysis, so if you will look at the previous momentum, look at this. Whenever the 8 and 7% movement, like market crash, whenever the 8% 7% market comes down, there is a chance that every time market takes a pullback, and if I'll show you my YouTube channel, I'll show you one thing. I have made a video quite a couple of days back where I showed that I'm expecting a pullback when, like, last time market crashed. I'll show you, just give me a second. Market can reverse. This was the video, like, which was not performed good 1 month ago. I have made the video, market can reverse, right? And at that point of time, market was trading somewhere at this point of time, and so, like, at that point of time I said that market can reverse, and the reasons were quite simple. If I'll show you the dashboard which I use for my personal use, I'll like that time the market was somewhere at this level, 18th of November, or somewhere at 30th December, 18th of November, somewhere at this level. So I expected that market can reverse, because this market breadth was its extreme. The stocks which were below 20 EMA comes to its extreme. Almost 2000 stocks were trading below 20 EMA, and whenever markets like come 7-8% down, there is a probability that market will take a pullback from at that same level. So look at this, एक बार ऊपर गया, फिर से नीचे आया. From the same level market has come down, from the same level, like this has reversed, and now again the market has gone to the same level. So there is a chance कि market फिर से वहाँ से reverse हो सकता है. And if the stocks below 20 EMA goes up, so there is a chance कि market overall market में एक pullback हमें देखने को मिल सकता है, right? So we are expecting a pullback now. So basically, generally, like, what I am expecting is market will open at the same level, market will go down, again it will reverse,
by the next half. So there is a chance कि यहाँ पे एक हमें hammer देखने को मिले और we can see a pull like a wick candle at this level, क्योंकि यहाँ पे जितने भी buyers होंगे completely वो सभी का stop loss trigger होगा तो वो सभी बाहर हो जाएंगे और उसके बाद we can see a pull back. और अगर यहाँ पे consolidate करने के बाद एक base form करने के बाद if market goes off then हम एक trend के side से swing trading resume कर सकते हैं. बट फॉर टिल जब तक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर ना जाए तब तक वी आर गोइंग टू ट्रेड विद स्मॉल क्वांटिटीज, राइट. सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर स्मॉल कैप. So basically I have few stocks in my watch list which I want to share with you all. So like in this market crash, which stocks I am planning to buy? Basically I always say on my reels, I always say on my YouTube videos, you would be aware that try to watch those stocks who are showing market strength. What do I mean by market strength? Market strength is something when overall market is against you, when overall market trend is against you, try to find those stocks which are in your favor. It means that if you are planning to get the upside momentum, try to find those stocks which has performed upside momentum in last few days or which was sideways, which hasn't come down. It shows that that stock was showing strength. There were some big players who were holding those stocks. So basically I have few stocks in my watch list. I analyzed almost you can say 1,000 stock. After that screening manually going to 200 stocks, I found this 6-7 stocks in my watch list. I'll show you, I'll give you the reasons, I'll give you my trading plans. So let's start with the first stock, Sudarshan Chemicals. Sudarshan Chemicals, even last week I shared in my watch list, but like we didn't got our entry in this stock as the overall market has come down. So look at this now, there is a chance that market agar pull back leta hai, so this stock might reverse, and if this stock goes above this level, there is a chance that इसमें momentum आ सकता है. Analysis is quite simple. Look at the supply zone. यहाँ पे एक बार market इस same level से ऊपर आता है, again it try to break this level, but फिर से नीचे आ गया, फिर से same level पे जाके almost sideways from since December, मतलब दिसंबर जनवरी almost 1-1.5 महीने से ये sideways same level पे है. एंड नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे एक फेक एंड मूव सेटअप भी फॉर्म हो रहा है. फेक एंड मूव सेटअप इन द सेंस जो भी यहाँ पे बायर्स जिन्होंने भी इन अ होप दैट मार्केट माइट गो अप, इन अ होप जिन्होंने भी बाय किया होगा, ये रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद like most of them have cancelled their trades or most of have them like exited their trade. So there is a chance कि अब उनको exit कराने के बाद some big players might enter into the stock and they might take the stock upwards. So the first stock is Sudarshan Chemicals. Look at the second stock which is in our watch list, that is SO Alcohols and Brew Limited. I shared this stock when this was trading at this level and I expected a momentum of this level. Look at this, when the market has crossed this level, the momentum has around of 5.68%. You can go and watch my reels as well. I have shared this stock on my Instagram reel as well, and in my last YouTube video, watchlist video, last week watchlist video, I've shared this stock SO Alcohols and Brew Limited. But now, even now, like this stock is at very good level, very good setup. So there is a possibility that if market stabilize, if market like takes a pullback, there is a chance that these are the stocks जो कि सबसे पहले ऊपर जाएंगे. And even like when the market was coming down, when the market has almost come down for 7%, look at this stock was giving positive momentum, and in last few days this has already almost given off 18% momentum in last like almost 7 to 8 days. So these stocks are showing market strength. There might be a case कि अगर market stable होता है तो ये stocks एक अच्छा momentum हमें देखने को दे. So the third stock is Goldium International. The analysis is quite simple. Look at this. यहाँ पे इस supply zone का market breakout देता है. Again a very good momentum. Whenever like I shared this stock when this stock was trading at this level as well. ठीक है, यहाँ पे market एक momentum देता है ऊपर की side. But again now it is sideways, taking a pullback from last 3 days. Same analysis, and if you trade in like a breakout and retest, this stock is also forming a kind of breakout and retest pattern. Breakout करता है, came for retest, like not perfectly but हाँ almost इस level को touch करके market sideways है. So there might be a case इसमें भी एक momentum हमें आ सकता है. Basically ये तीनों ऐसे stocks थे जो मैंने last week भी share कर रखा है. Let's look at the fourth stock जो कि एक नया stock है and which I have found this week. The stock is NACL Industries, and if you will look at the stock, look at this. So basically this level is a supply zone for the stock, and if I'll show you the weekly time frame of the stock, look at this. So almost in 2020, 5 years back, the stock was trading at 20 rupees, made a high, and almost for 2-3 years the stock was sideways, complete sideways, taking support from this trend line. It broke this trend line, came down, now forming lower low. But there is a good chance because look at this,
if you look at the volumes of this stock, whenever the market was sideways, even the green volumes was coming huge, which shows कि कोई एक बड़े players थे इसमें जो कि इसमें positions बना रहे थे. Look at the volumes, look at the volumes, look at the volumes. So there is a chance कि अगर इस supply zone के ऊपर निकलता है consolidation के बाद, so our first target would be around of या इजीली 12 से 15% तक का इजीली फर्स्ट टारगेट हमें इजी मिल सकता है इफ इट क्रॉसेस दिस लेवल on a daily time frame. If I'll show you, this would be our first target. And look at the if I'll show you the market strength as well, if I'll show you the small cap index, almost last week 7-8% नीचे crash किया, but this stock has almost like it is sideways from last 7 to 8 days. So there is a chance कि ये green candle के ऊपर अगर market trade करना शुरू करता है, so इसमें एक momentum आ सकता है. Look at the volumes as well, काफ़ी अच्छा volumes है. NACL Industries, I'll make a reel on this stock as well and I'll share with you. Fourth stock is Taj GVK Hotels and Resorts. इसमें आप देखो एक चीज़, अगर आप ब्रेकआउट रिटेस्ट ट्रेड करते हो तो एक बार मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल, फिर से नीचे आ जाता है. ऑलमोस्ट ये सभी बायर्स को ट्रेड से निकाल के इट गोज साइडवेज, कंप्लीटली साइडवेज था मार्केट फॉर ऑलमोस्ट 5-6 महीने. उसके बाद अप ट्रेंड रिज्यूम्स इन दिस स्टॉक, सेम लेवल से फिर से रेसिस्ट होकर नीचे आया, सेम लेवल से दोबारा रेसिस्ट होकर नीचे आया. उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया, वो भी with a very good volume at this in this candle. If you look at the volume, the average volume was 750k, but in the same stock within a same day volume आता है 3.5 million, almost 3.5 times ज़्यादा volume आता है. And as overall market sentiment is against, तो आप देखो breakout होने के बाद breakout, you can't say breakout fail हो गया because यहाँ पे volumes देखो काफ़ी कम हो गया है. जब ऊपर जा रहा था तो volume was coming huge, जब नीचे आ रहा है तो volume is completely drying up. इसका मतलब वीक हैंड्स जो होता है, जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, दे आर ओनली सेलिंग द स्टॉक, बिग प्लेयर्स आर नॉट सेलिंग द स्टॉक. अगर बिग प्लेयर्स यहाँ पे सेल करते सो यहाँ पे एक रेड बड़ी वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलता, बट एज द वॉल्यूम्स आर नॉट सो गुड, एज द वॉल्यूम इज कम्प्लीटली ड्राइड अप इन दिस स्टॉक. सो देर इज़ अ केस कि अगर मार्केट सेम लेवल पे फिर से जाता है एंड इफ इट गो साइडवेज फॉर ऑलमोस्ट 2 days भी, अगर साइडवेज यहाँ पे जाके अगर हमें एंट्री मिलता है, सो एक अच्छा मोमेंटम इसमें सेटअप बन सकता है. ताज GVK और स्टॉक को लेकर अगर कोई भी क्विक न्यूज़ आती है फॉर ऑलमोस्ट यहाँ पे विद इन अ डे अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके निकलता है, और इफ it comes down, I'll keep sharing it through my Instagram reels, because do you know it is not possible to make YouTube video जल्दी से बना के आप अपलोड नहीं कर पाओगे, it is not possible. So but in Instagram it is possible, क्योंकि बहुत easy होता है, आप रील्स क्रिएट करके शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आप अपलोड कर सकते हो to just give a people overall idea कैसा स्टॉक क्या परफॉर्म किया है, what was my basically planning. So let's move to the second last stock of today's LOY, Lloyd Metals and Energy. देख लो यार, आप बोलते हो ना मार्केट क्रैश में भी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करता है. एट दिस लेवल जब ये मार्केट यहाँ पे था ना, यहाँ पे समवेयर मेरी इसमें एक बार एंट्री ट्रिगर हुई थी, यहाँ पे मैंने ट्रेड किया, बट लाइक बाय जस्ट टेकिंग वेरी स्मॉल टारगेट मैंने यहाँ पे निकल गया था. बट लुक एट दिस, उसके बाद एक अच्छा ग्रीन कैंडल फिर फॉर्म करता है, रेड कैंडल. नाउ अगेन इट इज साइडवेज, इवन दो व्हेन द मार्केट इज कमिंग डाउन द स्टॉक इज साइडवेज. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई बड़े प्लेयर्स हैं जो मार्केट को होल्ड कर रहा है, स्टॉक को होल्ड कर रहा है. दे आर नॉट अलाउइंग बड़े प्लेयर्स टू लाइक क्रिएट मोर सप्लाईज. सेल ऑफ किसके कारण आता है? मार्केट स्टॉक जो है वो नीचे क्यों आता है? जब ओवरऑल ज़्यादा सप्लाई हो जाता है. इफ देर इज नो वन टू सेल दैट स्टॉक, सो ऑब्वियसली सप्लाई नहीं आएगा. एंड अगर सप्लाई आ भी रहा है, इफ द बायर्स आर इंटरेस्टेड इनफ कि जितने भी सप्लाई आ रहे हैं उनको हम बाय कर लें, सो ऑब्वियसली फिर सप्लाई वहाँ पे एंड डिमांड विल मीट, सो स्टॉक विल नॉट फॉल. सो दैट इज द केस विद दिस स्टॉक. मार्केट कंप्लीट साइडवेज है. अपने सेटअप, इसमें मेरा सेटअप क्या हो सकता है? ऑलमोस्ट एक मोमेंटम आ गया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड विथ माई लाइक कंप्लीट क्वांटिटी, बट अपने सेटअप के बेस पे आप इसमें देख सकते हो अगर कोई पोजीशंस बनती है कम क्वांटिटी में, सो यू कैन. बट जस्ट अ डिस्क्लेमर, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है. देयर इज अ 100% चांस कि ऊपर जाए और बहुत नीचे आ जाए, सो यू माइट लूज योर मनी. सो डोंट ब्लेम मी. लाइक अगर आपको ट्रेड करना है, सो ट्रेड एट योर ओन रिस्क. अपनी दिमाग लगाओ, अपनी एनालिसिस लगाओ, खुद के दम पे ट्रेड करो. लेट्स लुक एट द लास्ट स्टॉक ऑफ टुडेज, साइन पोस्ट इंडिया लिमिटेड. ठीक है, अगर हम इसकी वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें, सो और लाइक लास्ट ईयर इन फेब ये स्टॉक IPO आता है, और उसके बाद एक अच्छे ट्रेंड के बाद लुक एट दिस, ये कम्प्लीटली सेल ऑफ आता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 ये 3 बार इस लेवल से लाइक कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट देता है, एंड ओवरऑल जो है हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है. सो देयर माइट बी अ केस कि इसमें
वॉल्यूम्स तो आ रहे हैं बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव बिकॉज ऑलरेडी एक मोमेंटम आया है इसमें एंड यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन भी है, राइट? बट 1 2 3, लुक एट द वॉल्यूम्स आर ऑल्सो गुड इन द स्टॉक. अगर स्टॉक में एंट्री मिलता है, देखो अगर स्टॉक को अगर मुझे ग्रेडिंग करनी हो अगर आउट ऑफ 1 to 10, तो आई विल रेट समवेयर 8 to 10, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट इसमें ऑलरेडी एक मोमेंटम आ चुका है सबसे पहले. एंड ओवरऑल जब ट्रेंड रिज्यूम हुआ है तो फर्स्ट बार मोमेंटम, फर्स्ट लेग में मोमेंटम आया, नाउ इट इज़ कंसोलिडेटिंग. अगर आप देखोगे तो एक बार ऊपर गया, 2 बार ऊपर गया, फिर से तीसरा बार ऊपर गया. एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी साइडवेज, लाइक कंप्लीटली कंसोलिडेशन नहीं मिल रहा है. आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट अगर पूरे आप 7 दिन 8 दिन तक कंसोलिडेट करे विद इन अ जोन, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देगा आई वुड बी कॉन्फिडेंट मोर टू बाय दिस स्टॉक. बट टिल देन आई डोंट हैव एनी प्लान फॉर दिस स्टॉक. बट हाँ, अगर कोई भी अपडेट होता है कीप शेयरिंग इट थ्रू माई इंस्टाग्राम स्टोरी. सो दीज वेर फ्यू स्टॉक्स जो कि मेरे वॉच लिस्ट में है एंड आई होप आप भी अपने वॉच लिस्ट में रखो. एंड मेक श्योर दैट अगर आप ट्रेड करते हो तो अपने रिस्क पे करो. डोंट टेक इट एज अ टिप और एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन. This is only for learning purpose, and thank you so much for watching this video, and stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.